after seeing the basic of dimensional analysis. So basically dimensional analysis में क्या होता है, आपको equations जो होते हैं उनके बीच में relation establish करना होता है. So the method of establishing the mathematical relation between the different physical quantities. So that is called as dimensional analysis. Okay. So in dimensional analysis, we are going to see the first the theorem which is called as Buckingham's Phi theorem. Okay, so this Buckingham Phi theorem, it states, okay, so you are supposed to remember the equation. So this Buckingham Phi theorem states if there are n variables, okay, this n variable can be independent or dependent, anything, okay, in a physical quantity, okay, or in a physical phenomenon. जो भी आपको इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन में सपोज देयर आर n variables and out of this n variable there are m fundamental dimension. Fundamental dimension हमारे कितने होते हैं, m, l and t. So they are always 3. Okay, so fundamental variables m is always 3. So the value of m is always 3 for the problems of liquids. Okay, आप कभी गैस फ्लो का प्रॉब्लम देखते रहे हो तो उस केस में m, l, t and theta. तो m का वैल्यू 4 होगा गैसेस प्रॉब्लम के लिए, but here we are going to talk about the liquid flow. So here m is always 3. Okay. So what is the statement? If there are n variables and out of these n variables there are m fundamental dimensions, okay, then these variables can be arranged, okay, into n minus m number of dimensionless number, okay, and each dimensionless number is called as phi term. Okay, so हम इसको statement को समझेंगे. For example, consider any equation, okay, suppose Reynolds number Re equals to rho Vd upon mu, okay. So in this equation there are how many properties? First property is mass density, second is velocity, third is diameter and fourth is viscosity. Okay, so how many physical properties are there? 4. So n equals to 4. Okay, so consider any equation in which there are n number of physical quantities. Out of these physical quantities, m number is primary quantities. So primary quantities हरदम कितनी होती है? 3. Okay, तो हमारी equation क्या बोलता है? If there are n variables, okay, in a physical phenomena and out of this n variables there are m fundamental equation or fundamental dimensions, okay, then this equation can be arranged into n minus m. N minus m means 4 minus 3. 4 minus 3, okay, dimensionless term, okay, and each dimensionless term is called as pi term. So there will be here 4 minus 1, 3, that means 1. So there is one dimensionless term and that dimensionless term is called as pi 1. Okay, so there will be one dimensionless term which is pi 1 और ये pi 1 को हम बोलते हैं Reynolds number. Okay, so this is dimensionless number. Reynolds number का कोई यूनिट नहीं होता, it has no unit, no dimension. So dimensionless number is a number which has no unit, no dimension. Okay, so in this equation there were 4 properties and out of these 4 properties 3 were fundamental properties. So 4 minus 3, there is one dimensionless number, okay, and that dimensionless number, for solving the problem we will call that pi 1, okay, and after deriving the relation that pi 1 is named as Reynolds number. Okay, so this is the statement. Okay, so again we will see what is the statement. If there are n variables and out of that n variable there are m fundamental properties, okay, then the variable can be arranged into n minus m number of dimensionless numbers called as pi terms. Okay, so we will see we will see the entire procedure of this theorem. So consider there are n number of properties, okay, let x1, x2, x3 and so on. Okay, let x1, for example, x1 is velocity, x2 is acceleration, x3 is density, x4 is viscosity, x5 is mass density, okay, and so on till n.
Okay, so there are n number of properties which are x1, x2, x3, and so on. Okay, out of this uh, n properties, let x1 is dependent variable. Okay, that means, for example, for the case of Reynolds number, okay, Reynolds number में क्या होता है, रो b d upon mu. Okay, so we can say Reynolds number, it is a function of mass density into velocity into diameter into viscosity. Okay, now इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी को आप बोलेंगे डिपेंडेंट प्रॉपर्टी. ओके, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल वेलोसिटी. अभी वेलोसिटी विस्कोसिटी पे डिपेंड करेंगे. ओके, विस्कोसिटी चेंज हुआ, सपोज वाटर फ्लो हो रहा है तो वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, ऑयल फ्लो हो रहा है तो वेलोसिटी कम रहेगा. Okay, again velocity will depend on diameter also, velocity will depend on mass density also. Okay, liquid change किया तो उसका mass density change होगा. Okay, so let x1, out of this any x1 is a dependent variable, and x2, x3 and so on, they are independent variable on which x depends. Okay, then x1 is a function. Okay, so we can say x1 is a function of, okay, this velocity is a function of density, density, diameter, and viscosity. Okay, so x1 is a function of x2, x3, and so on till xn. Okay, so we can write x1 is a function, or we can say all the any new function of all this, it will be equals to 0. Okay, we can write this any new function f1 of x1, x2, x3 and so on, it is 0. Okay, here the equation is dimensionally homogeneous equation. That means ये जो लेफ्ट साइड में हम ऐसा टर्म निकालने वाले हैं. ओके, जैसे हमने रो वी डी अपॉन म्यू निकाला है, सो रो वी डी अपॉन म्यू, इनके आप डायमेंशन देखोगे तो इनका डायमेंशन m0, l0, t0 आने वाला है. ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू राइट साइड डायमेंशन ऑफ 0. डायमेंशन ऑफ 0 क्या रहेगा, m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0. ओके, तो हम क्या करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में, बकिंघम पाई थ्योरम में, ये जो भी x1 which is a independent, or velocity, it is a dependent of diameter, viscosity and mass density. तो हम इनके बीच में कैसा रिलेशन निकालेंगे कि लेफ्ट साइड में इन सब के डायमेंशन 0 हो जाएंगे. ओके, तो दैट डायमेंशन इट शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट साइड, दैट इज m0, l0, t0. ओके, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन 1 को डायमेंशनली होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं. ओके, सो इट कंटेन n वेरिएबल, and out of that n variable, m variable are fundamental dimension. So according to Buckingham Phi theorem, there should be n minus n number of pi terms. Okay, we can say this function can be replaced by pi terms. So function of pi 1, pi 2, pi 3 and so on, यहाँ पे n number है, so n minus m pi terms आएंगे. So pi of n minus m, it equals to 0. Okay, ये सब आपको सिर्फ स्टेप्स देखने हैं, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम हम ये सारी स्टेप्स अप्लाई करने वाले हैं. ओके, सो ईच ऑफ द पाई टर्म इज डायमेंशनलेस नंबर एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम. ओके, ओके, सो लेट द फर्स्ट पाई टर्म इज, अभी एक्चुअली यहाँ पे रिपीटिंग वेरिएबल्स का एक कंसेप्ट आता है. ओके, okay, I think we will directly see the problem में आपको समझ में आएगा. तो कंसिडर, सी हम यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और पीछे जाके वो स्टेप देखेंगे तो आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा. तो कंसिडर एनी प्रॉब्लम, तो द प्रॉब्लम इज द रेजिस्टिंग फोर्स आर ऑफ अ सुपरसोनिक प्लेन ड्यूरिंग द फ्लाइट. ओके, दैट मीन्स one aeroplane is moving. Okay, this aeroplane is moving with a supersonic velocity. Okay, and whatever the resisting force, when this plane is moving, so the air
air is applying some resisting force. So the resisting force on a supersonic plane during a flight, it can be considered as the dependent on. That means it is dependent variable, and it is depending on length of the aircraft. Okay, suppose length change होता है तो resisting force change होने वाला है. So it is depending on the length, it is depending on the velocity, and it is depending on the viscosity of the air mu, and density of the air mu, and bulk modulus of air k. Okay, so this resisting force, it is depending on these five variables: L, V, mu, rho, and K. Then express the relationship between this variable and resisting force. Okay. तो हमारे प्रॉब्लम में क्या दिया है? प्रॉब्लम में हमें दिया है R is a function of length, velocity, viscosity, mass density and bulk modulus K. Okay. Is this clear? ये हमें प्रॉब्लम में दिया है. अभी इसको हम कैसे रिराइट कर सकते हैं? हम इसको बकिंगहैम पाई के मेथड में ले जाएंगे. सो बकिंगहैम पाई के मेथड में क्या बोला जाता है कि R is a dependent variable of all these properties. So there will be any new function, that is f1. So f1 will be a function such that the function of R, L, V, mu, rho and K, okay, it should be equals to 0. Okay, that means हम एक हमारा बकिंगहैम पाई थ्योरम क्या बोलता है कि इफ R is dependent on this property, तो इनके बीच में एक डायमेंशनलेस नंबर्स हो सकते हैं. ओके, जिनका फंक्शन रहेगा R, L, V, mu, rho and K. ओके, और ये डायमेंशनलेस नंबर रहेंगे तो इक्वल्स टू राइट साइड के डायमेंशन क्या देंगे? m0, l0, t0. ओके, तो हमने क्या किया, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी इनके बीच में डायमेंशनलेस फंक्शन एस्टैब्लिश कर दिया. Now how many properties are here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So what is the value of n? Total number of variable 6. Okay, the number of fundamental dimension. Fundamental dimension कितने होते हैं? Mass, length and time, L and T. That m is always 3. Okay, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो फ्लूइड मैकेनिक्स में डायमेंशनलेस एनालिसिस का, आपको m का वैल्यू हरदम 3 लेना है. Okay, so the number of variable is 6, number of fundamental dimension is 3. So as per Buckingham Phi theorem, there will be n minus m number of dimensionless numbers called as pi terms. The number of dimensionless pi terms, that is n minus m. So that is 6 minus 3. So they are 3. Okay. After that, for solving the problem, again you should know the dimension of all these properties. ये 6 properties के dimension आपको याद होने चाहिए. Okay. याद नहीं है तो आपको derive करते आने चाहिए, जो हमने फर्स्ट यूनिट में एक derive किए थे. Okay. So dimension of R. R is what? Force. Force is nothing but mass into acceleration. So mass, so m1 acceleration meter per second square. So L1 t minus 2. So m1 L1 t minus 2. Velocity meter per second. So L1 t minus 1. Absolute viscosity का हमने already first unit में derive किया था. It is m1 L minus 1 t minus 1. Rho is kg per meter cube. So m1 L minus 3. And K bulk modulus. Okay, bulk modulus is Newton per meter square. So force upon meter square. So m1 L1 t minus 2 upon L2. Okay, so इसका dimension already हमने derive भी किया था. It is m1 L minus 1 t minus 2. Okay, so dimension आपको पता होनी चाहिए how to derive them, या फिर आपको याद होनी चाहिए. So how many pi terms are there? There are 3 pi terms. So we will say let these pi terms are pi 1, pi 2 and pi 3. Okay? So thus the 3 pi terms are, let's say, pi 1, pi 2 and pi 3. Okay, so हम ये तीनों टर्म को यहाँ पे पुट करेंगे. So we will say any function of pi 1, pi 2 and pi 3. This is 0. So this pi 1, pi 2 and pi 3 are what? Dimensionless numbers. Okay, so now step 2. So step 2 is for each pi term, okay, there will be m plus 1 variable where m equals to 3. Okay, so m का वैल्यू 3 है, तो हर पाई टर्म के लिए कितने प्रॉपर्टी हमें लेना है? हमें 4 प्रॉपर्टी लेना है. ओके, दैट मीन्स m plus 1 वेरिएबल लेने हैं. सो पाई 1. ओके, अभी पाई 1 जो रहेगा इट विल बी फंक्शन ऑफ 4 प्रॉपर्टीज. ओके, 1, 2, 3 and 4. Okay, pi 2 will be also function of 4 property.
इसको मैं F1 F2 ले लेता हूँ. It is again a function of four property 1, 2, 3 and 4 and pi 3. Pi 3 is also the function of four property 1, 2, 3 और 4. अब ये चार प्रॉपर्टी कौन से लेने हैं? हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है? टोटल 6 प्रॉपर्टी है. आर एल वी म्यू रो एंड के. ओके, अभी इनमें से एक्चुअली जो तीन प्रॉपर्टी रहेंगी वो रिपीट होंगी. ओके, तीन प्रॉपर्टी हर बार रिपीट होंगी. ओके, और जो बची तीन प्रॉपर्टी है उसमें से हमें एक एक लेना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेंथ ले लेते हैं, लेंथ. यहाँ पे हम वेलोसिटी ले लेते हैं, वेलोसिटी. और यहाँ पे हम सपोज डेंसिटी ले लेते हैं, डेंसिटी. तो यहाँ पे भी आपको लेंथ, वेलोसिटी, डेंसिटी लेना है. यहाँ पे भी लेंथ, वेलोसिटी और तीसरी प्रॉपर्टी डेंसिटी लेना है. ओके, सो ये प्रॉपर्टी को हम रिपीट करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज रिपीटिंग वेरिएबल. ओके, सो हमें 6 प्रॉपर्टीज में से 3 रिपीटिंग वेरिएबल चूज करने हैं. ओके, और बची जो 3 प्रॉपर्टी है, जैसे हमने लेंथ, वेलोसिटी और मास डेंसिटी को रिपीटिंग वेरिएबल ले लिया, तो कौन सी प्रॉपर्टी बची? आर, म्यू एंड के. ओके, तो इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी पार्ट 1 के साथ लेना है, सो आर ले लिया. रिमेनिंग प्रॉपर्टी म्यू और के, सो उसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी म्यू ले लिया. ओके, एंड रिमेनिंग थर्ड प्रॉपर्टी के. ओके, सो इस तरह से आपको इक्वेशन फॉर्म करना है. ओके, सॉरी. ओके, सो लेट pi 1 इज l to the power a1 b to the power, या इनको पावर्स देना है. जो रिपीटिंग वेरिएबल होते हैं उनको पावर देना है. सो l to the power a1 b to the power b1 rho to the power c1 इनटू बची थी प्रॉपर्टी में से कोई भी एक प्रॉपर्टी ली r. pi 2 इज l to the power a2 b to the power b2 rho to the power c2. कौन सी दो प्रॉपर्टी बची थी? म्यू और के, उसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी ले ली, म्यू. देन pi 3 इज l to the power a3 b to the power b3 rho to the power c3 into k. Again लास्ट बची हुई प्रॉपर्टी के ली. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा कि हमने एल, म्यू और रो क्यों लिया? हमने एल, वी और म्यू क्यों नहीं लिया, या फिर आर क्यों नहीं लिया? ओके, सो बेसिकली इस ये जो रिपीटिंग वेरिएबल है इनको चूज करने के लिए कुछ रूल्स हैं. ओके, सो वी विल सी मेथड ऑफ सिलेक्टिंग द रिपीटिंग वेरिएबल. सो जो आप रिपीटिंग वेरिएबल लेते हो वो कैसे चूज करते हो? ओके, सो मेथड ऑफ सिलेक्टिंग द रिपीटिंग वेरिएबल. ओके, सो जो रिपीटिंग वेरिएबल होते हैं दे शुड बी सिलेक्टेड सच दैट उसमें से पहला जो रिपीटिंग वेरिएबल होगा इट शुड इंडिकेट द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी. ओके, सो जो फर्स्ट रिपीटिंग वेरिएबल आपको लेना है, द रिपीटिंग वेरिएबल should be selected such that one of the repeating variable it should denote the geometric property. Okay, तो geometric property मतलब length दिया होगा तो length लेना है, diameter दिया होगा तो diameter लेना है, height दिया होगा तो height लेना है. Suppose length, diameter और height नहीं दिया है तब आपको area दिया होगा तो area लेना है. area भी नहीं दिया है तो फिर volume दिया होगा. Okay, बट आपको सपोज एरिया और लेंथ दोनों दिया है तो उस केस में आपको हरदम लेंथ चूज करना है. ओके, सिंपल, जिसका डायमेंशन सबसे सिंपल होगा वो आपको चूज करना है. ओके, सो आपको लेंथ, डायमीटर, हाइट, एरिया, वॉल्यूम, ये इन 5 में से कोई ना कोई एक क्वांटिटी दिया होगा तो आपको वो फर्स्ट रिपीटिंग वेरिएबल चूज करना है. ओके, तो जो फर्स्ट रिपीटिंग वेरिएबल रहेगा इट शुड बी सिलेक्टेड एज ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी or it should be selected so that it indicates the geometry. Then second variable जो आपको choose करना है. Okay, then second variable it should denote the flow property. Okay, so flow property मतलब आपको velocity दिया होगा, velocity नहीं दिया होगा तो acceleration दिया होगा. Okay, acceleration नहीं दिया है तो और कोई flow property दिया होगा in the problem. Okay, such as आपको angular velocity दिया होगा. Okay, mass density दिया होगा या फिर विस्कोसिटी दिया होगा. ओके, सो सेकंड पैरामीटर जो चूज करना है इट शुड इंडिकेट द फ्लो प्रॉपर्टीज सच एज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, मास डेंसिटी, काइनेटिक विस्कोसिटी, ओके, सरफेस टेंशन एंड सो ऑन. तो पहला वेरिएबल ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, सेकंड वेरिएबल फ्लो प्रॉपर्टी, और जो थर्ड वेरिएबल चूज करोगे
third variable, it should indicate dynamic property. So dynamic property such as sorry, फ्लो प्रॉपर्टी में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ही आता है, और जो डायनेमिक प्रॉपर्टी होती है उसमें विस्कोसिटी, मास डेंसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, देन फोर्स आता है, फोर्स, ओके, फोर्स दिया होगा, ड्रैग फोर्स या फिर रेजिस्टिंग फोर्स, ओके। तो आपको थर्ड जो है वो फ्लूइड प्रॉपर्टी चूज करना है। सो फर्स्ट इज ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, सेकेंड इज फ्लो प्रॉपर्टी, एंड थर्ड इज फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट रिपीटिंग वेरिएबल क्या होना चाहिए आपका, डायमेंशन होना चाहिए। सेकेंड रिपीटिंग वेरिएबल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनमें से कुछ होना चाहिए। और थर्ड जो रिपीटिंग वेरिएबल है वो फ्लो प्रॉपर्टी से होना चाहिए, दैट इज mass density, absolute viscosity, surface tension, force, etc. Okay, so this is the basic rule जो आपको याद रखना है for selecting the repeating variable. Okay, then other rules are also there. Repeating variable selector should such that इनके बीच में कोई dimensionless number form नहीं होना चाहिए. Then repeating variable together must have same number of fundamental dimension. Okay, अभी एक एग्जांपल दिया है कि इन मोस्ट ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स प्रॉब्लम रिपीटिंग वेरिएबल जो चूज किए जाते हैं वो रहते हैं डायमीटर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, मास डेंसिटी, सॉरी वेलोसिटी एंड मास डेंसिटी, ओके, देन लेंथ, वेलोसिटी, मास डेंसिटी, देन लेंथ, वेलोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। सो बेसिकली ये सबसे ज्यादा चूज किए जाते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। सो अगेन वी विल कम बैक टू आवर प्रॉब्लम। ओके, तो हमने प्रॉब्लम में जो रिपीटिंग वेरिएबल चूज किया है, तो पहला रिपीटिंग वेरिएबल कौन सा चूज किया है, जो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी दिखाता हो। ओके, अभी नाउ सी इन दिस आर, आर क्या है, फोर्स, ये आपको ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी दिखाता है क्या, नहीं। लेंथ, लेंथ आपको ज्योमेट्रिक दिखाता है क्या, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, यस। सो हमने फर्स्ट रिपीटिंग वेरिएबल कौन सा चूज किया है, लेंथ। ओके, देन सेकेंड रिपीटिंग वेरिएबल आपको फ्लो प्रॉपर्टी, फ्लो प्रॉपर्टी क्या होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो इसमें से वेलोसिटी कहीं दिख रही है क्या, यस, वेलोसिटी। तो हमने सेकंड वेरिएबल क्या चूज किया, वेलोसिटी। अभी थर्ड रिपीटिंग वेरिएबल है वो फ्लूइड प्रॉपर्टी होना चाहिए। सो फ्लूइड प्रॉपर्टी कौन सी है यहाँ पे, फ्लूइड प्रॉपर्टी तीन है। ओके, एक तो फ्लूइड प्रॉपर्टी है मास डेंसिटी, एक फ्लूइड प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, और थर्ड फ्लूइड प्रॉपर्टी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सॉरी बल्क मॉड्यूलस। अभी इन तीनों में आपको इनके डायमेंशन देखने हैं। ओके, अभी डायमेंशन देखने हैं, तो डायमेंशन किसका है, 1 मिनट, डायमेंशन आपको देखने हैं मास डेंसिटी का डायमेंशन। मास डेंसिटी का डायमेंशन कितना है, m1l-3। ओके, विस्कोसिटी का, विस्कोसिटी कितना है, m1l1t-1, एंड बल्क मॉड्यूलस का क्या है, m1l-1t-1। इन तीनों में सबसे सिंपल डायमेंशन किसका है, सिंपल डायमेंशन है मास डेंसिटी का। ओके, तो थर्ड तीन ऑप्शन है हमारे पास। ओके, बट तीनों ऑप्शन में सिंपल ऑप्शन कौन सा है, मास डेंसिटी। तो हम थर्ड वेरिएबल जो चूज करेंगे वो मास डेंसिटी रहेगा। ओके, तो द डायमेंशनलेस नंबर पाई 1 इट विल बी l to the power a1, v to the power b1, रो टू द पावर c1 इनटू तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी r ले लिया हमने। ओके, देन पाई 2 विल बी l to the power a2, v to the power b2, रो टू द पावर c2 into remaining one of the property, that is mu. Okay, then pi 3 is l to the power a3, v to the power b3, rho to the power c3 into the remaining property, that is bulk modulus k. Okay, तो हमने pi 1, pi 2 and pi 3 define कर दिया। Okay, so is this clear how to define the pi terms? Okay, after this, see if you are having any doubt you can interrupt and ask the question, because कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। एक बार आपको बकिंगहैम पाई थ्योरम की जो स्टेप समझ में आ गए तो कोई भी प्रॉब्लम रहो, ओके, आप वही स्टेप्स अप्लाई करना है। सो यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ बकिंगहैम पाई थ्योरम इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप्स। ओके, तो आप इसमें आपको पहला स्टेप क्या याद रखना है कि establish the relationship between the given problems, okay, a given property. So R is a function of L, V, mu, rho and K. So we can say for dimension analysis we can have a new function f which is a function of R, L, V, mu, rho and K equals to 0. So then
count these properties. So number of properties is 6. So number of variable is 6. The number of fundamental property is always 3. So there are n minus m, 6 minus 3 number of dimensionless numbers or pi terms. So they are called as pi 1, pi 2, and pi 3. Therefore, function of pi 1, pi 2, and pi 3 equals to 0. After that, for each pi term, there will be pi plus 1, m plus 1 number of variables. And this m plus 1 number of variable, it will have m number of repeating variable. Okay, so m number of repeating variable is 3. So ये repeating variable कैसे choose करना है? इसमें से one of the variable it should indicate the geometry, second should indicate the flow property, and third should indicate the fluid property. So we had selected L, V, and rho. So pi 1 is L to the power A1, V to the power B1, rho to the power C1 into R. Pi 2 is L to the power A2, V to the power B2, rho to the power C2 into mu. And pi 3 is L to the power A3, V to the power B3, rho to the power C3 into K. Okay? Then step 4. Then in step 4, अभी जो हमने pi 1, pi 2 and pi 3 equations फॉर्म किए, इसको हमको इंडिविजुअली सॉल्व करना है. ओके, और ये इंडिविजुअली सॉल्व करना है assuming their dimensional homogeneity. Okay, so what is dimensional homogeneity? So dimensional homogeneity is dimension of left side and right side are same. Okay, so dimension of pi 1. So dimension of pi 1 क्या है? Dimensionless number. So इसके dimension है m0, l0, t0. Okay, okay, again I'm writing here. So pi 1, it is l to the power a1. Okay, then velocity to the power v1, then mass density into the power c1 into resisting force r. So basically इसको हमका dimensionally homogeneous equation assume करना है. So left side का dimension हो गया m0, l0, t0. Okay, this should be equals to right side dimension. So right side dimension is what? L का dimension क्या होता है? L1. So it is L1 to the power A1. Okay, L1 to the power A1. Then dimension of velocity. So dimension of velocity is L1 t minus 1. Okay, L1 t minus 1 to the power B1. Okay, the dimension of mass density. Mass density dimension is M1 L minus 3. M1 L minus 3 to the power C1. Okay, and dimension of resisting force. So force is mass into acceleration. So M1 L1 t minus 2. Okay, so this dimension should be same. अब ये dimension same है, इसका मतलब m to the power left side it should be equals to m to the power right side. Okay, so इनके m के powers आपको equate करने हैं on left side and right side. Okay, और यहाँ पे आप ओपन करोगे. So L1 to the power A1 is A1 or 1 into A1. Here it will be 1 into B1 and t to the power minus 1 into B1. So L to the power B1, t to the power minus B1. Here it will be m to the power M1, L to the power minus 3C1. Okay, so हम इनके equating the power of M, L and T on both sides. So first is equating the power of M. So left side में क्या है? M to the power 0. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे m नहीं है. So again m to the power 0. यहाँ पे भी m नहीं है. So m to the power 0. Here m to the power 1 whole to the power c1. So it is m to the power c1. So हम power equate करेंगे. So equals to c1 plus m to the power 1. So it is c1 plus 1. Okay. So it is 0 is equal to c1 plus 1. Therefore we can say the value of c1 is minus 1. Okay. Similarly, अभी next हम L के power equate करेंगे. So equating the power of L. Okay. So left side में क्या रहेगा? L to the power 0. So it is 0. That equals to here L to the power A1. So A1 आएगा सिर्फ. Okay. Power का आप equation कर रहे हो. Then plus L1 to the power B1. So it is L to the power B1. So यहाँ पे सिर्फ B1 आएगा. यहाँ पे L to the power minus 3 whole to the power C1. So it is L to the power minus 3 C1. So it is minus 3 C1. Okay. And यहाँ पे L to the power 1 है. So plus 1. Okay. So अभी यहाँ पे actually C1 का वैल्यू तो हमें minus 1 पता है.
ए और बी का वैल्यू नहीं पता, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो हम बी को राइट साइड में ले जाएंगे, सो इट इज ए टू द पावर इज इक्वल टू माइनस बी वन। ओके, ये राइट साइड में जाके माइनस बी वन हो जाएगा। देन ये माइनस थ्री सी वन राइट साइड में आके प्लस थ्री सी वन हो जाएगा, एंड ये प्लस वन राइट साइड में आके माइनस वन हो जाएगा। सो इट इज माइनस बी प्लस थ्री सी वन माइनस वन। ओके, अभी यहाँ पे हम सी का वैल्यू पुट कर देंगे। सो सी का वैल्यू कितना है, माइनस वन। सो इट विल बिकम प्लस थ्री, या फिर अभी बी का वैल्यू पता नहीं है तो हम इस इक्वेशन को एज इट इज रखते हैं। ओके, अभी हम पहले बी का वैल्यू निकालते हैं। तो बी का वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, वी विल इक्वेट द पावर ऑफ टी ऑन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। सो लेफ्ट साइड में रहेगा टी टू द पावर जीरो, इट इज जीरो। तो दैट इक्वल्स टू, यहाँ पे टी नहीं है, सो बेसिकली यहाँ पे जीरो ही रहेगा। हियर टी टू द पावर माइनस वन होल टू द पावर बी वन, सो इट इज माइनस बी वन। देन हियर अगेन टी इज absent, then here t to the power minus 2, so it is minus b1 minus 2. Okay, so you can say b1 को राइट साइड में ले जाओ, so b1 equals to minus 2. okay, अभी ये b1 का वैल्यू, ये b1 का वैल्यू और ये c1 का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, we will put here. okay, so it is minus b1, so it is minus of minus 2. okay, minus of minus 2, it will become plus 2, so it is plus 2. Then plus 3 into minus 1, so it is minus 3 minus 1, so it is 2 minus 3 minus 1, so 2 minus 4, it is minus 2. So a1 is minus 2, b1 is minus 2 and c1 is minus 1. okay, so ये वैल्यू हमें पता चल गई a1 b1 c1 की। तो ये वैल्यू हम ऊपर पुट कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे। okay, we will put this value here. So we will have I1 equals to L to the power minus 2, V to the power minus 2, rho to the power minus 1 into R. Okay, so we can say ये जो माइनस वाली टर्म है ये डिनोमिनेटर में चले जाएंगी। okay, so it will be rho into V square into L square. okay, so it is R upon L square into V square into rho, so R upon rho L square V square. This is equation number 1 और this is the value of pi1. so इस तरह से आपको pi1 की वैल्यू निकालनी है। okay, similarly आपको pi2 की वैल्यू निकालनी है। so for pi2 we will again assume this pi2 as homogeneous equation. okay, इसको आपको homogeneous equation assume करना है। okay, so our pi2, so pi2 is m0 l0 t0 dimensionless number, so that equals to L to the power rho 2, a2, so it is L1 to the power a2. Then velocity to the power v2, so L1 t minus 1 to the power v2, okay, into mass density into the power c2, so it is m1 l minus t to the power c2 into absolute viscosity mu, so mu का dimension है m1 l minus 1 t minus 1. okay, after that again in this equation equating the powers of mass, length and time on left side and right side, so equating the power of m, l and t on both sides. okay, so power of m, so power of m will be m to the power 0, so right side में 0, that equals to, यहाँ पे m का टर्म नहीं है so 0, यहाँ पे m का टर्म नहीं है so 0, यहाँ पे m to the power 1 go to the power c2. okay, so c2 plus m to the power 1. okay, so it will be plus 1, so c2 plus 1 equals to 0 or c2 equals to minus 1. okay, similarly we will equate the power of L, so power of L equate करेंगे, so यहाँ पे L to the power 0, so यहाँ पे right side में आएगा 0, so that equals to L to the power a2, so plus a2 L to the power b2, so again plus b2, यहाँ पे L to the power minus 3 whole to the power c2, so it is L to the power minus 3 c2, so here minus 3 c2, okay, L to the power minus 1, so minus 1. okay, so यहाँ पे a2 और b2 दो अननोन है, c2 का वैल्यू पता है तो हम a2 को b2 के फॉर्म में लिख देंगे, so we will have a2, ये सारे टर्म राइट साइड में ले जाएंगे, so plus b2 will become minus b2, minus 3c2 will become plus 3c2, minus 1 will become plus 1, so a2 equals to b2 plus 3c2 plus 1. okay, अभी हम पहले b2 का वैल्यू निकालेंगे, so for that we will equate the power of t, so equating the power of t, so we will have t to the power 0, so लेफ्ट साइड में आ जाएगा 0, यहाँ पे t नहीं है so no problem, यहाँ पे t to the power minus 1 whole to the power b2,
So okay, so minus b2. Then यहाँ पे भी 3 ही है. Okay, and here minus 1. So we'll have b2 minus 1. Minus b2 minus 1 equals to 0. therefore b2 equals to minus 1. Okay, अब ये c2 और b2 का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे. Okay, so it is minus b2. So minus of minus 1. So it will become plus 1. Then plus 3c2. So plus 3 into minus 1. So minus 3 plus 1. So we will have 1 minus 3 plus 1. So 2 minus 3. That is minus 1. Okay. So a2 is minus 1, b2 is minus 1, c2 is minus 1. So we'll put in equation. So pi 2 equals to l to the power minus 1, v to the power minus 1, rho to the power minus 1 into mu. Okay. So we will have pi 2 equals to mu upon l rho, l b rho. Okay. Or we can say mu upon rho b l. Okay. After that, third pi term. So third pi term is pi 3 equals to l to the power a3, v to the power b3, rho to the power c3 into k. Okay. अभी हम इसको assume करेंगे dimensionally homogeneous equation and we will equate the power of m, l and t. तो pi का dimension क्या हुआ m0, l0, t0. Okay. On right side we will have L. So it is L to the power A3. So L1 to the power A3. Then velocity to the power B3. So it is L1 T minus 3 to the power B3. Okay, rho to the power C3. So it is M1 L minus 3 to the power A3. Then K. K का dimension put करना है. So M1 L minus 1 T minus 2. Okay. Remember, for solving the problem ये dimension आपको याद होने चाहिए. Okay, because ये unit का नाम ही है dimensional analysis. यहाँ पे हम dimensions के बीच में mathematical relations form करते हैं. Okay, so equating the power. So equating the power of m, we have 0 equals to यहाँ पे m नहीं है, so 0. यहाँ पे भी m नहीं है, so 0. Okay, यहाँ पे m to the power 1 to the power a3. So it is a3. Sorry, c3. यहाँ पे c है. Okay, so it is c3. Then यहाँ पे m to the power 1, so plus 1. Okay, so we'll have c3 plus 1 equals to 0 or c3 equals to minus 1. After that, equating the power of L. Okay, so here L to the power 0, so 0. Right side L to the power a3, so plus a3. Here L to the power 1 whole to the power b3, so plus 1 into b3, so simply plus b3. Here L to the power minus 3 whole to the power a3, so L to the power minus a3. यहाँ पे sorry minus c3, यहाँ पे c है. Okay, so minus c3 and here L to the power minus 1, so minus 1. Okay, so in we will convert the equation of a3 in terms of remaining terms. So इस सारी term right side में ले जाओ. We will have a3 equals to minus b3, minus c3 will become plus c3, minus 1 will become plus 1 on right side. Okay, then third, पहले हम b3 का वैल्यू निकालेंगे. So we will equate the power of t. So on left side t to the power 0, so 0. That equals to right side. So right side is here t to the power 0, so 0. T to the power minus 3 b3. Okay, t to the power minus 3 b3 L1. Okay, sorry, velocity है ना, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या रहता है L1 t minus 1. यहाँ पे एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे t minus 1 है, L1 t minus 1. So it is minus 1 b3, so minus b3. Okay, and here t is absent and here t to the power minus 2, so minus 2. So it is minus b3 minus 2. So we can say b3 equals to minus 2. So ये b3 और c3 का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे. Okay, so it is minus b3, so minus of minus 2, so it is plus 2. Then plus c3, so plus 3 into minus 1, so minus 3. Yeah, plus 1, so it is 2 minus 3 plus 1, so 3 minus 3, that is 0. Okay, so we'll put the value. So we'll have pi 3 equals to L to the power 0. Okay, a3 is 0, b to the power minus 2. Okay, b3 is minus 2, and rho to the power c3. C3 is minus 1, so rho to the power minus 1 into k. We say that equals to k upon v square into rho. Okay, we had calculated pi 1, pi 2 and pi 3. Pi 1 क्या है हमारा? Pi 1 was
r upon rho L square V square. Pi 2 was uh, pi 2 was mu upon rho V L, and pi 3 is k upon rho V square. Okay, so substituting the value of pi 1, pi 2, and pi 3. So we will have any function of r upon rho L square V square, comma, mu upon rho E L, comma, k upon rho V square that equals to 0. Okay, नाउ सी, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होती है इनके इन तीनों डायमेंशनलेस नंबर पाई 1, पाई 2 एंड पाई 3 के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना. ओके, तो लास्ट स्टेप आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेप है. ये हमारा पाई 1 है. ओके, सो पाई 1 इज दिस, पाई 2 हमने अभी कैलकुलेट किया है, दिस इज म्यू अपॉन रो वी एल, एंड पाई 3 इज के अपॉन रो वी स्क्वायर. अभी लास्ट स्टेप में क्या होता है, इनके बीच में मैथमेटिकल रिलेशन जो आपको प्रूव दैट में या शो दैट में दिया होता है. ओके, तो कभी कभी पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2 इंटू पाई 3 होता है, कभी इनका मल्टीप्लीकेशन करना होता है. ओके, कभी उनका डिवीजन करना होता है. पाई 1 इक्वल्स टू पाई 1 अपॉन पाई 2. ओके, पाई 1 डिवाइडेड बाय पाई 2 डिवाइडेड बाय पाई 3. कभी डिवीजन करना होता है. कभी pi 1 it is a function of pi 2 and pi 3 बोला होता है, pi 2 and pi 3 बोला होता है. ओके, तो अभी ये गिवन प्रॉब्लम में हमें pi 1 is a function of pi 2 and pi 3 बोला है. ओके, so pi 1 r upon rho L square V square. Okay, it is a function of mu upon rho V L, comma k upon rho V square. तो ये हमें प्रॉब्लम में शो दैट में दिया होता है. तो लास्ट स्टेप में आपको जो भी शो दैट के लिए बोला है उस फॉर्म में आपको लिख देना. ओके, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी विल हैव आर इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर इनटू फंक्शन ऑफ म्यू अपॉन रो वी एल, कॉमा के अपॉन